Assalamu alaikum dear students of class 2. How are you? I hope you will be good and enjoying at your home. Welcome to your English class. Open your OPE book page number 29. Dear students, in previous video we read about the story of shoemaker and the owl. Now we know that what is in the story. Now we will complete here these two exercises B and C. Dear students, read the story again carefully and complete the exercises. Exercise B is true or false. Read the sentences about the story and tick those that are true. Dear students, here are 11 sentences. From these sentences, we have to tick the sentence that are true, not the false sentence that are true. Dear students, हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में उन सेंटेंसेस को टिक करेंगे जो सच है. फॉल्स का मतलब झूठ और ट्रू का मतलब जो सही है. ठीक है, सही और गलत. ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत. ठीक है, अब जो सेंटेंसेस सही हैं, जिन सेंटेंसेस में सच बोला जा रहा है, हम उनको टिक करेंगे. ठीक है, चलिए पहले सच, इनमें से सच कौन सा है हम वो टिक करते हैं. First we have to read. Now sentence number 1 is, here we are given example. The shoemaker was poor, and how that we tick here. Okay, you can see a tick mark is here. Sentence number 1 is, the shoemaker had a big shop. Do you think that the shoemaker had a big shop? No, the shoemaker had a small shop. So leave it, come ahead. Number 2 is, he had a lot of leather. No, he had a small little leather. Number 3, in the morning an old pair of shoes was on the chair. No, a new pair. Number 4, a lady paid him 4 gold coins for the shoes. No, come ahead. Number 5, he bought some more leather and thread with money. Yes, it's true. Make a tick mark. Just like this, we will add tick mark on sentence number 5. Sentence number 6 is, the next morning 6 shoes were on the table. No. Number 7, the shoemaker and his wife hid in the shop. Yes, it's true. Sentence number 7 is true. Number 8, they saw 2 witches. No. Number 9, they were wearing new clothes. No. Number 10, the elves made 3 pairs of trousers. No. Number 11, the shoemaker and his wife wanted to help the elves. Yes, it's true. Dear students, we selected the sentences that are true. Now we have to select those sentences that are false. I have given numbers to them. The numbers of false sentences 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sentence number 1, the shoemaker had a big shop. No, the right sentence is true. The shoemaker had a small shop. Number 2, he had a lot of leather. No, he had a little leather. In the morning, an old pair of shoes was on the chair. No, in the morning, a new pair of shoes was on the table. डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो गलत सेंटेंसेस हैं वो सिलेक्ट किए हैं. अब आपको उन गलत सेंटेंसेस को सही करना है. मैंने आपको बताया है कि उनको सही कैसे करना है. तो जैसे कि ये नंबर 1 सेंटेंस मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे ओल्ड हैड अ बिग शॉप लिखा है. अब आपको सही आप सही इस तरह से करेंगे कि आप लिखेंगे स्मॉल शॉप. ओके, आपको ये सेंटेंसेस अपनी कॉपी में लिखने हैं. फॉल्स जो सेंटेंसेस हैं आपको उन्हें ट्रू करना है. जैसा कि एक्सरसाइज सी में कहा गया है, चेंज द फॉल्स सेंटेंसेस एंड मेक देम ट्रू. राइट ऑल द ट्रू सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. व्हेन यू मेक फॉल्स सेंटेंसेस ट्रू, राइट देम ऑन योर नोटबुक. So dear students, you have to make the false sentences true and write them on your notebook. ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. यहाँ पे हमने ट्रू सेंटेंसेस को टिक किया है और जो फॉल्स सेंटेंसेस हैं हमने उनको सिलेक्ट करके नंबर्स दिए हैं. फिर हम उन सेंटेंसेस को अब ट्रू करेंगे. आप स्टोरी अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर आप जो सेंटेंसेस रहे हुए हैं उनको फॉल्स से ट्रू करिए. ठीक है.
So dear student, it is your homework. Do your homework very carefully. I'll be back with the next video. Till then, Allah Hafiz. Take care.